See, this is a question based on surface tension. It was asked in ITJ 2020. So, see, when water is filled carefully in a glass, that means there is a glass on which you pour water. It fills up to a height h above the rim of the glass due to surface tension. Normally, we think that okay, water will say this is a glass. If it is filled up to the rim, it is like that. So it goes some extra height actually. It's filled up to a height h above the rim. Okay, and it forms a bulging surface like that, as shown in the figure. So to calculate h just before water starts flowing, model the shape of the water above the rim as a disc of thickness h having semicircular edges. A disc of thickness h having semicircular edges. That means a disc है, disc. That means if you look from the top, you see this radius. Okay, and if you sorry look from the front, तब तो ये मिलेगा. माने ये height h है. This height is h and like this. And माने actually this radius r is this. Okay, radius of the disc. Now actually what happens, the radius of the disc r is much greater than the thickness h. So practically with respect to h, r can be treated as infinity or infinite radius. So I'll choose a part of this. देखो part of this कैसे लेंगे हम? Actually I will choose a part of this, ये वाला. मतलब ये तो सेमी सर्कल जैसा हो गया, ठीक है ना. देखो ये दिस इज द सरफेस, ये है, ठीक है. सॉरी माने दिस थिंग एक्चुअली है ना, ये सॉरी. हाँ, सो दिस इसका लेंथ एक ले लेता है L, है ना. लेट अस टेक अ लेंथ ऑफ दिस L. सो सरफेस टेंशन यहाँ से होगा, from here it is SL, and from the top also, as the length is L, so you know surface tension perpendicular to the length SL. And the force here, फोर्स F. अच्छा देखो, फोर्स तो इधर से भी लगेगा ना, बाहर से भी लगेगा, बिकॉज सी आउटसाइड इट इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो दैट्स पी नॉट. नाउ इनसाइड देखो, यहाँ पे पी नॉट है और यहाँ पे क्या है, पी नॉट प्लस एच रो जी, है ना. सो देखो आउटसाइड का जो फोर्स है दैट इज एफ प्राइम, दैट इज पी नॉट इंटू प्रोजेक्टेड एरिया इज सो एल इंटू एच, है ना. प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया इज अ रेक्टेंगल, प्रोजेक्शन ऑफ दिस एरिया, प्रोजेक्ट एरिया याद है तो ये रेक्टेंगल. अच्छा, नाउ दिस एफ इज एवरेज प्रेशर, सो दिस एफ इज देखो, एफ इज एवरेज प्रेशर, सो पी नॉट प्लस एच रो जी बाई 2 into LH. So now balancing forces on this part you get, here you get 2SL is equal to 2SL. What is the extra force there? 2SL is H square rho g by 2 into L. So this L cancels out. So H is equal to how much? H is equal to 1 by 2 रूट ओवर ऑफ एस बाई रो जी. सो ये रहा एच, ठीक है. सो प्रॉब्लम इज सॉल्व आफ्टर यू सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, यू गेट दिस. बट देयर इज अ फंडामेंटल डिफेक्ट इन द क्वेश्चन. एक प्रॉब्लम है, समस्या है. समस्या ये है कि इफ़ यू कंसिडर दिस एलिमेंट, ये देखो तो फोर्स बैलेंस कर दिया ना, इधर से रहा एस एल, इधर से रहा एस एल, यहाँ से कुछ फोर्स हो गया, यहाँ से भी कुछ फोर्स हो गया, दैट्स फाइन. बट थिंग इज दैट इसका जो ग्रेविटी है, वेट जो है इस लिक्विड का, हु विल बैलेंस दैट, ठीक है, समझ में आया. इसका जो ग्रेविटी है कौन बैलेंस करेगा इसको. देखो एस एल,
सो एस एल जो भी फोर्स है ना, एस एल इज हियर, एस एल इज हियर, दिस एस एल इज हियर, दिस इज एफ, दिस रेड वन इज एफ, ब्लू वन इज एफ प्राइम, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है. सो दैट मीन्स द वाटर can't be like this really na. So it can't be like this, there has to be some angle. That means it has to be माने this surface tension ये जो होगा actually SL, इसका जो vertical component है that will support this weight W, ठीक है. बट फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम कह सकते हो कि यहाँ तो हॉरिजेंटल फोर्स से हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, बट दैट डजंट शो अस द रियलिटी ना. वी आर नोअर क्लोज टू रियलिटी, बिकॉज ऐसा एक चीज़, ये चीज़ का जो वेट है, इट कैनॉट रिमेन अनबैलेंस. सो द एक्चुअल शेप वुड बी लाइक दिस. दैट मीन्स ये सरफेस टेंशन हॉरिजेंटल ठीक है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट, दिस हैज़ टू बैलेंस द वेट, ठीक है. खैर ठीक है. सो शुड हैव बीन correctly given actually. So this angle theta and phi whatever should have been given properly to make it a perfect question. Thanks. इतना ही.